Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. Uh, we are just again in the phase of testing to see how this works and how this live session happens. So we are an immigration firm, and we help people immigrate to Canada, live in Canada, study in Canada, settle in Canada through different pathways Canada has. And we will be trying to go on from time to time, ideally Pakistan time, 4 p.m. to 8 p.m. with some intervals. And you can always ask your questions, like general questions about your curiosities and about your quests that you will have. We deal in immigration, both federal immigration as well as your provincial immigration, the premiership, skill immigration, PNPs, and all sort of immigration stuff. We also help people apply for a visitor visa to Canada, but only a very selected people. We don't call or we don't say to everyone, go ahead and apply and try your luck, because I mean, it's just not the luck. It's also your documents and what the visa officer will see in these documents and many more things. But indeed, we help people to settle in Canada from different countries or all around the world. And we have been into this business since 2019. We are licensed and we are regulated, and we believe that everyone should be consulted, should have the right to consult with a genuine, legitimate consultant. We also promote the vibe or the notion that only genuine students should be, or genuine people should be, or genuine consultants should be in the access of clients. And we value the money that the clients have, and their emotions are also priceless. Especially people from Pakistan, from Middle Eastern countries, from other countries of the Asia, including Central Asia like China, India, Bangladesh, as well as the Far East Asia, Thailand, Malaysia, Philippines, and much more, many other countries out there. So we will endeavor to provide them, we do endeavor to provide them very top-notch services, but above all, our aim or our motive has always been to guide people in the very righteous way. पाकिस्तान में लोगों के लिए you can always ask us questions, and you can always have your queries. You can contact us via the website. We do have an appointment system. Majority of our online appointments are paid, but in very exceptional cases, yes, we can provide free advice as well on a non-commercial basis, but it's only for a very few people. My email address, my phone numbers, along with the WhatsApp are there. If anyone is interested, or if anyone is keen on knowing about their procedures, processes, and much more, they can always contact me. I will be mostly online on most of the days, starting from Monday to Friday, ideally, and the timing should be 4 p.m. to 8 p.m. Pakistan Standard Time. पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टोरी मिलती है
और स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं होती हैं कि मुझे एक एजेंट कह रहा है जी कि वो आपने वीज़ा फीस देनी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, मैं स्पॉन्सरशिप मंगाऊंगा, मैं आपके बैंक स्टेटमेंट खुद बनाऊंगा और आपको मैं पैसे भी नहीं लूंगा आपसे, और जब आप कनाडा पहुंच जाएंगे तो आपको ये इतने पैसे दे दें। सो या it is happening. It doesn't make sense. It doesn't make sense to me. It may not be making sense to you people who will be or who are watching this video. But this is what is happening. सादा लोग हैं वो ऐसे लोगों के फ्रॉड में आते हैं, वो पहले से 10-20-30 हज़ार लेंगे, फिर 50, फिर लाख, फिर 2-4। At the end of the day, they lose a lot of money. And we are not talking just about thousands of PKRs. We're talking about millions of PKRs, and even at times of thousands of dollars as well. So, for people in general, it should be really important for you. आप लोगों के लिए बहुत ये जरूरी है कि देखें आपका कंसल्टेंट कौन है, और जो वो बात कर रहा है वो रियलिस्टिकली हकीकी तौर पे हो भी सकती है या नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी आप एप्लीकेशन लगाएं और वीजा होगा और ये होगा और ऐसे होगा। आप उसको देखें वो कौन है, क्या उसके पास अथॉरिटी है और उसकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और वो क्या उसके पास नॉलेज, एजुकेशन, लाइसेंसिंग या कुछ इस तरह की रेलेवेंट चीज है। अगर आप समझते हैं कि वो कंसल्टेंट जो फेक कंसल्टेंट है और जो कि आपके पैसों के पीछे है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रीम्स दिखा रहा है, उसके पास कुछ सॉलिड एविडेंस अपनी क्रेडिबिलिटी का नहीं है और उसकी क्लाइंटेज भी अच्छी नहीं है, so you should must avoid such people and stick to your ordinary or whatever life that you are living. Life is always indeed not an ordinary thing. Generally people ask कि कनाडा की इमिग्रेशन मुश्किल है या आसान है, हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। बेसिक चीजें जो कि हर एक लोग को, हर एक एस्पिरेंट को चाहिए कि वो इवेलुएट करे अपने आप में, एंड दैट इज टू सी इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कैसे एलिजिबल होंगे? आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, आपके पास सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, or of course there is some financial requirements, there is some age restrictions or benefits of certain age groups, वो भी हैं, वो भी इसमें बहुत काउंट होते हैं। सो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से इसको इवेलुएट करना है कि वो आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फिर बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमने कनाडा में विजिट वीजे पे जाना है, तो बताएं क्या कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट daring thing to do for Canada is to apply for a visitor visa because a lot of refusals, a lot of refusals. बहुत आसान नहीं है कनाडा का विजिटर वीजा लेना, बहुत मुश्किल है। आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। वीजा ऑफिसर्स ये जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग कनाडा में एंटर होते हैं और इसको कभी नहीं छोड़ते। So it's very important कि you understand कि आप ने किस तरह से इनको जन्म करना है, वो होनी भी जानना चाहिए। अगर आप का पर्पस नहीं है कनाडा में जाने का, विजिट करने का या मीट करने का किसी को, किसी रिलेटिव का पास, तो आप बेहतर है आप वीजा ना अप्लाई करें। अगर आपके पास जेन्युइन इंटेंशन नहीं है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका वीजा नहीं होगा। बट अगर आपके पास अच्छे इंटेंशंस हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पाकिस्तान में ठीक है, आपकी टाइज पाकिस्तान में अच्छी हैं और आप जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कि इमिग्रेशन लॉज के अगेंस्ट है, और आप इसकी एश्योरेंसेस बाय वर्ड्स, बाय डॉक्यूमेंट्स वीजा ऑफिसर को देते हैं और आपका लेजिटिमेट पर्पस भी है व्हिच कैन बी प्रूवन बाय योर डॉक्यूमेंट्स, सो यू most of the people they do have reasonable chances for their visitor visas as well. As far as it's about studying in Canada, yes, Canada काफी
अपने आप को प्रमोट भी किया है और अपनी कंट्री को एक्नॉलेज करवाया है internationally. So Canada, one of the top destinations for international students. Um, what I observe in people in my clients और जिन लोगों से मेरा interaction होता है, Canada is the first choice for them. Even UK, Australia, they are not in parallel to the comparison what they have for Canada. They do believe that Canada is better. Canada is because of the multi factors, multi level of benefits that Canada offers to its people. And one of the reason is कि आप जो है वो कनाडा आपको बड़ी आसानी से दे देता है, पीआर दे देता है, बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप पीआर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है जो कि कनाडा में, जो कि यूके में नहीं है, सॉरी, जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। बहुत से प्रोविंसेस हैं जहाँ पे डिग्री करेंगे तो नॉमिनेट कर देंगे इमिग्रेशन के लिए, पीआर के लिए। दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट people most of the time they want to obtain a degree and not only a degree but also the PR or the pathway to a future for the family, for themselves and for their kids as well. Canada ये offer करता है और इस रेंज में फाइनेंशियली इट कैन बी टफ। कनाडा में पैसे थोड़े से ज़्यादा जरूर लगते हैं, लेकिन कनाडा is very in demand as well as very fruitful। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ स्टिल इंसेंटिव्स, बहुत इंसेंटिव्स जो कनाडा भी प्रोवाइड कर। तकरीबन 2023, 22, 21, 20 पिछले सालों में देखें तो कनाडा ने जो स्टडी वीजा इश्यूज किए हैं, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 lakh और 700 to 500 to 800,000 वीजास पर ईयर इन लोगों ने इश्यूज किए हैं। बट इस साल नई पॉलिसी अनाउंस हुई around January this year, and they restricted their study permits threshold to around 3,60,000, which is 36,100,000 Canadian। क्या आप ऐसे सिर्फ 3,60,000 लोगों को या अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 लोगों को जो स्टडी परमिट इशू करेंगे, उसमें इन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस को उनका कोटा दे दिया है। हर कॉलेज के बारे में, हर यूनिवर्सिटी को उसका अपना कोटा मिल गया है। कोशिश करें आप पब्लिक फंडेड कॉलेजेस में जाएं, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में जाएं और अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पहले पूछें कि जो कोर्स आप कर रहे हैं वो आपको वर्क परमिट देगा या नहीं देगा, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आप पहले से रेज आउट कर सकते हैं। लोकेशन देखें, लिविंग कॉस्ट देखें, डिमांड ऑफ योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री देखें, और देन गो ऑन एंड ऑन। We are into this business for almost 5 years, not exactly though, and we have helped people. We will continue to help people in a very legitimate and in a very genuine way. We do not want people to be detracked or to be frauded, and even if someone is in need of some help, someone is in need of some assistance in culling down the ghost consultants or the consultants who are not giving them a good reason or who are not guiding them well, we will be always happy to provide them with the positive and legitimate advice. पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, कई लोग यूके में बहुत ज़्यादा स्टडी पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कभी भी कनाडा की डिमांड एज अ स्टडी डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी पीपल कभी भी कम नहीं हुई। सेल्फ इट हैज बीन always been higher and higher. It's just about how much money you need
and know if the client can afford it or not. And this is what really matters at times. If you may have any questions, you can post these questions here, and we will be always very happy to answer your questions and to give you advice and things like that. So today was just an experiment. I was just trying to learn how the software works and how we can navigate through the different features that are offered on the softwares like YouTube, Facebook, and another software that I'm using, which is looking good to me. So I hope that I will be live more and more even in the times to come, and I will be very happy to help anyone who needs it, especially when it comes to Canada, especially when it comes to seeking genuine and legitimate advice. I believe this may have been little help to you people, and I will strive always to keep helping and to be in approach of those people who in general don't have access to highly paid consultants. I mean, charging someone is not bad if you are giving them the right, accurate, and sincere advice. Everyone has the right to charge for their time, expertise, education, and their knowledge, and this should be promoted. That seeking a paid advice is always a beneficial thing, not a negative. So I hope to see you to be live again very soon. I must say thank you so much, everyone.